So the topic which we are going to discuss is the traditional and modern approaches to public administration. So first, we will concentrate on the traditional approaches to public administration, and later on we'll move on to modern approaches. The traditional public administration was established to run a state in a stable and predictable way in a relatively static environment, and therefore it was not prepared to meet new challenges and was resistant to change. देखिए जो starting में traditionally whatever was set up, whatever bureaucratic system was set up, it was mostly set up in a situation where the environment was quite static. In the sense, the socio-economic changes which were happening in the society were very minimal. बहुत कम changes हो रहे थे समाज में. And that is one of the main reasons why bureaucracy which was developed or the public administration which was developed, it was mostly resistant to change. अगर समाज में कोई भी change या परिवर्तन हो रहा है तो उनको वो अच्छा नहीं लगता था. Majority of the times they wanted to maintain status quo. उनको वो status quo maintain करना था. So traditional public administration's perspective is quite different than the modern perspective, because modern times, if you see the society, we have gone under tremendous change, not only social, economic, but also technologically, ideologically, we also have undergone changes, which has imposed new challenges, due to which the public administration perspective or the way we look at public administration has to change. Today, it has to adjust and accommodate to a rapidly, at times, unpredictably changing environments. Over the last few decades, the efforts across the world to conduct substantial reforms in the public sector were directed at ensuring good governance in terms of effective, ethical, accountable, and transparent administration. So, as I mentioned today, change is taking place very rapidly. When we are discussing about bitcoins, we are discussing about blockchain technology. Internet has become a common thing. It has become a normal thing now. It is not a new technology. We are talking about artificial intelligence. We are talking about machine learning. We are talking about robotics. We are talking about patents, intellectual property rights such as copyrights and trade secrets. So the bureaucracy has to understand the changing needs of the society, where we are discussing about nuclearization. We are talking about space technology. We are talking about oceanography. So advancement in the agricultural sector, use of different applications, social media. So these things have come at such a fast pace that the administration has to increase its way of response. It has to become more effective. It has to become more ethical, accountable, and transparent. That's why government has undertaken a lot of efforts to improve the governance. मैंने आपको कहा था कि गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी एफर्ट्स लिए हैं, जैसे कि ई गवर्नेंस, वेयर दे आर यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स. They are using social auditing. They are using citizen charter. They are using various methods through which they are trying to increase the people's participation in the decision-making process of the government. So अभी जो change हो रहा है वो rapid है, और at some times it can be unpredictable also. All right, because now people are, literacy rates have gone up, employment has been generated, people have become empowered to take their own decisions based on the information which they are receiving from media. So people have become more informed, and people have become more aware about the situation, what's happening to them besides them. So hence the governance has to change its perspective in the present times. They cannot hang on to the old traditional approaches to carry out the functioning of the government. The accumulation of change in public administration over that period is really impressive, and yet almost no national government would argue that administration change has now been completed, or that the public administration has been put into good working order. So ऐसा, yes, public administration bureaucracy has undergone tremendous change in the last couple of decades, but you cannot say that still we have accomplished what we had expected. According to our expectations, the accomplishment have not been still achieved. अभी तक जो हमने सोचा था, जब तक हमने जिस तरीके से प्लानिंग की थी, अगर हम बात करें 26/11 में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, that time we were finding कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है.
हमारे पास वेपन्स नहीं है, हमारे पास सर्विलियंस इतना अच्छा नहीं है, तो तब जाके हमारे देश में इम्प्रूवमेंट्स हुए, तब जाके हमें पता चला कि वी हैव टू बी मोर प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। तो ये चीजें जो हो रही हैं, जैसे बिटकॉइंस को अभी लेटेस्ट में ये बताया जा रहा है कि बजट जो है इस साल का, उसके हिसाब से 30% टैक्स लगेगा अगर आप कुछ आप कमाते हो वर्चुअल करेंसी से, 30% टैक्स, दैट्स अ क्वाइट अ ह्यूज अमाउंट। सो यस, legislations have come up where still there are no proper laws, there are no still proper guidelines given by either the legislature or by the judiciary to tackle such problems. Crime rate बढ़ रही है, white collar crimes are increasing. So government, police, administration, everybody has to be on their toe in the present changing scenario. And hence more needs to be done so that good governance is ensured through various laws, rules and regulations, specifically through different policy which the government is trying to implement. Now, we look at how the traditional perspective or the traditional approaches studied public administration, what orientation they did have, what kind of analysis they did have, what kind of principles they followed, so that the bureaucrats were able to follow the traditional approaches. आज भी कहीं ना कहीं इंडिया में जो ट्रेडिशनली जो अप्रोच थी कि भाई बस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लिया, टैक्सेस कलेक्ट कर लिया, अपना काम हो गया, बट नो, बिकॉज स्पेसिफिकली हमने पिछले सेशंस में भी देखा विद रिस्पेक्ट टू द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेसिफिकली आफ्टर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, अभी मॉडर्न अप्रोच को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न टेक्निक्स को सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाके हम हमारे जो प्रेजेंट चैलेंजेस हैं उसको हम मीट कर पाएंगे। द क्लासिकल मॉडल और द ट्रेडिशनल मॉडल यू कैन से was thought to be the best way for organizing the public sector work and undoubtedly worked well for a long time. जी हाँ, जो पब्लिक सेक्टर में उनको लगता था, जो ट्रेडिशनलिस्ट थे या जो क्लासिकल मॉडल का इस्तेमाल करते थे, उनको ये लगता था कि दिस इज द बेस्ट वे वी कैन मेक द ब्यूरोक्रेसी और द गवर्नमेंट फंक्शन, और फॉर अ लॉन्ग टाइम दिस अप्रोचेस वर क्वाइट सक्सेसफुल इन वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, कि ये जो ट्रेडिशनल क्लासिकल मॉडल है, ट्रेडिशनल अप्रोच है गवर्नमेंट में काम करने का, ये काफी समय तक सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ। The traditional model of public administration has been regarded as the most successful theory of public sector management, although it does not have a single coherent intellectual foundation. जी हाँ, बहुत सारे अलग अलग थिंकर्स ने ट्रेडिशनल मॉडल क्रिएट किया, हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव था, हर कंट्री अपने हिसाब से ट्रेडिशनल मॉडल को अप्लाई करती थी, बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा कि कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कल्चर का इम्पैक्ट होता है, सोसाइटी का इम्पैक्ट होता है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनके ऊपर इम्पैक्ट करता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री, द मैनेजमेंट इज डिफरेंट, बट द certain basic principles are the same. And yes, it has been considered to be most successful because it was successful for a very long duration of time. And hence, but still, it does not have a single person, even though Woodrow Wilson was the first person who talked about politics administration dichotomy. But as we learned through the evolution of public administration as a discipline, we understood that you cannot keep that watertight compartmentalization between politics and administration. आप दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते. Both of them are a part of the same system. Both of them are the part of the same process. उसको आप अलग नहीं कर सकते. Its theoretical basis is derived from Woodrow Wilson and Frederick Taylor in the US, the Northcote Prevalent Report in the UK and Weber in Germany. तो ये फाउंडेशंस था ट्रेडिशनल अप्रोचेस का, जहाँ पे विल्सन, टेलर, द नॉर्थकोट प्रेवलेंट रिपोर्ट, वेबर, अलग अलग देशों में इन्होंने अपने हिसाब से अपने थियोरेटिकल बेसिस अलग अलग बनाए, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा हर एक कंट्री का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, हर एक कंट्री का अपना कल्चर होता है, वैल्यूज होते हैं, एक सिस्टम होती है जिससे गवर्नमेंट फंक्शन करता है। क्योंकि यूएस, यूके और जर्मनी के इवन दो ऑल ऑफ देम आर डेमोक्रेसीज, बट स्टिल द वे ऑफ फंक्शनिंग इज क्वाइट डिफरेंट। In general, it is characterized as an administration under the formal control of the political leadership. जी हाँ, ट्रेडिशनल अप्रोच में एक ब्यूरोक्रेट और या एक एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा एक पॉलिटिकल या पॉलिटिशियन के अंडर रहेगा। तो कितना भी बड़ा वो आईएएस ऑफिसर बन जाए, उसको अपने पॉलिटिकल बॉस का बात मानना पड़ेगा, बिकॉज द पॉलिटिकल लीडर इज द
पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, लोगों ने उसको चुन के उस पर्टिकुलर ऑफिस में खड़ा किया और ही इज रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। तो जो वो कहेगा उसी हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटर को अपना काम करना पड़ेगा, अनलेस इट इज इलीगल, unless it is fraud, unless it is misrepresentation, corruption, then you have a choice of not doing the work. But more often than not, when it is a straightforward policy given by the politician, you have to accept it and you have to move forward and you have to implement the policy. It is based on a strictly hierarchical model of bureaucracy. जैसे hierarchy होती है, judiciary में hierarchy है, police department में hierarchy है, revenue department में hierarchy है, तो हर department में अपनी अपनी hierarchy होती है। क्यों? Because there has to be a clear demarcation of authority कि कौन order देगा और कौन order सुनेगा। A constable cannot order a police commissioner what to do. Vice versa is possible कि भाई police commissioner constable को बताता है क्या करना है, but उल्टा नहीं हो सकता। तो hierarchy is quite important on the basis of which the work is functioned under bureaucracy. It is staffed by permanent, neutral and anonymous officials. जी हाँ, इस एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी लोग काम करते हैं उनका परमानेंट जॉब होता है। They are there for it's a career where they are working more often than not around 60 years of age, जब retirement की एज होती है। They are politically neutral. They do not care which political party is in power, which political party is following the policy. The main function of the politician or the main function of the administration is to implement the policies and provide good information and data so that a proper policy can be framed by the administration. And they're anonymous. कोई हीरो नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, जैसे बहुत सारे कभी-कभी एक आधा ऑफिशियल आ जाता है मीडिया के आगे, बड़ी-बड़ी बातें करता है। No, administrators have to work behind the curtain. They are not on the stage. Stage पे भाषणबाजी करने के लिए पॉलिटिशियन होता है, ब्यूरोक्रेट नहीं। ब्यूरोक्रेट हैज टू रिमेन एनोनिमस, उसका नाम जरूरी नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पोस्ट, जिस पोस्ट पे वो काम कर रहा है। They are motivated only by the public interest and not by profit. But लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि आज के डेट में, अगर मैं आज के डेट के हिसाब से अगर बताऊं तो जी हाँ, प्रॉफिट ओरिएंटेशन भी है आज के डेट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। पब्लिक इंटरेस्ट तो ओवरऑल हमेशा रहेगा। The serving and governing party equally and not contributing to policy but merely administering those policies decided by the politicians. तो ये थोड़ा पुराना अप्रोच है। जैसे मैंने कहा कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इनका ज्यादा कोई योगदान नहीं होता है, इनका मेजर योगदान जो है वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में। तो ये पुरानी अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है। आज के डेट में ये एप्लीकेबल नहीं है, जहाँ पे लोअर ऑफिशियल्स भी एडमिनिस्ट्रेशन में अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, क्योंकि टॉप लेवल लोगों को कई बार पता नहीं होता कि ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम्स क्या है, तभी जाके जो लोअर ऑफिशियल्स हैं वो सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं। ऑलराइट, सो लोगों को सर्व करना है, एट द सेम टाइम पॉलिटिकल पार्टी को भी खुश रखना है उनको, एट द सेम टाइम उनको सारे लोगों के डिमांड्स एक्सेप्ट करके चेंजेस भी लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। This model and its definition has been widely accepted and it is used in the Western countries and many in the continental Europe during the 19th century and the first half of the 20th century. तो ये जो definition है या जो approach है, ये काफी सालों तक इसको इस्तेमाल किया गया, almost till 1950, 1950 तक ये particular traditional model या traditional approach उसको इस्तेमाल किया गया, जहाँ पे सभी को लगता था this is the best way to administer any country. The key feature of this model is that in the modern governmental systems, professional bureaucrats execute the tasks of public administration while separated from the political mechanisms as well as from the private sphere. तो इस ट्रेडिशनल अप्रोच का जो बेसिक स्फीयर है कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी है, कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मॉडर्न सिस्टम है, उसमें प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं, उनका काम एग्जीक्यूट करना है, उनका काम प्रोफेशनली पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। दे हैव नथिंग टू डू विद द पॉलिटिकल मैकेनिज्म्स और द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर और पॉलिटिशियंस के सबका कोई लेना देना है नहीं, ओनली जो ऑर्डर आएगी उसको उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है न्यूट्रली, विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ पर्सनल एजेंडा, आपको वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। तो आज के डेट में थोड़ा चेंज हो गया है। आज अभी प्राइवेट सेक्टर के साथ भी और पॉलिटिशियंस के साथ, दोनों के साथ मिलके काम करना पड़ता है। पुराने जमाने में अप्रोच अलग थी, अभी की अप्रोच अलग है, वो हम आगे जाके और डिटेल में देखेंगे। In contrast to this model, the earlier pre-modern models were based on personal relationship. जी हाँ, ब्यूरोक्रेसी एस्टैब्लिश होने से पहले या जो ट्रेडिशनल क्लासिकल मॉडल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश होने से पहले
there was this system of bureaucracy or administration which was based on personal relationships. मतलब अगर मैं राजा हूँ, if I am the king, so I will always keep the ministers or the senapati or people who are besides me for taking major decisions who are known to me. So उसमें पर्सनल लॉयल्टी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता था rather than merit. आपकी फैमिली लिनिएज, आपकी एज, आपका जेंडर और आपका ओवरऑल प्रोग्रेस, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता था rather than concentrating on the policy implementation. Okay. So personal relationship पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था bureaucracy establish होने से पहले. The most important characteristics shared by the earlier systems of administration is that they were personal. मुझे जो loyal है उसी को मैं अपना सेनापति बनाऊंगा, मुझे जो लॉयल है उसी को मैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाऊंगा, ट्रेजरर बनाऊंगा, जो मुझसे लॉयल है उन्हीं के साथ. It was based on loyalty to a particular individual, such as a king, a leader, a minister, or a party, instead of being impersonal, based on legality and the loyalty to the organization and the state. देखिए, administrator cannot be loyal to any politician. He is only loyal to the Constitution of India. That's it. जो laws हैं, rules, regulations हैं, laws, constitution है, उसको bureaucrat loyal होना चाहिए, किसी politician को नहीं. He has to be impersonal. He cannot be the agenda or the criteria for which you are getting selected is not personal loyalty towards the king. It should be your merit. कि आप कितने capable हैं इस particular काम को करने के लिए. All right. So these are the most important factors which we should reflect on. कि पहले पुराने जमाने में the kings were more concerned about their own territory rather than outside. The end of patronage or nepotism in Europe and the spoil system in the USA came at the end of the 19th century, which set the beginning of forming a governmental administration based on merit and political neutrality instead of political dependence and clientelism. जी हाँ, जैसे 19th century खत्म होने पे आ गई, already so the spoil system जो थी USA में, and the nepotism system or patronage system was in Europe. So ये खत्म होने पे आ गया था. Nepotism, favoritism, these all things were slowly getting deteriorated, and there was more focus on the recruitment on the basis of merit and political neutrality. That politically you should be neutral. You cannot be dependent or having loyalty towards a particular political party or a particular political viewpoint. So आपको डिपेंड करना पड़ेगा लॉज के ऊपर, रूल्स के ऊपर, रेगुलेशंस के ऊपर, rather than किसी किंग के ऊपर, किसी लीडर के ऊपर जिसकी लॉयल्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. The European and the American public administration has passed through different historical developments, but the Weberian approach became common for them, and both stressed the necessity of an impersonal, formally regulated and hierarchical mechanism. So both of them, when they started, their more aim was with respect to what should be the historical development or Weberian approach में भी उन्होंने काफी so hence अगर आप यहाँ देखें, दोनों यूरोप और अमेरिका दोनों ने वेबर का जो अप्रोच था, जो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, तीसरे चैप्टर में वेबरियन अप्रोच और वेबरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी को हमको डिटेल में पढ़ना है. तो वेबर हमेशा ये कहते थे कि जो एक ब्यूरोक्रेट है वो इम्पर्सनल होना चाहिए, उसने पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. शुड बी, उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव इम्पर्सनैलिटी की तरफ ये था कि ही शुड बी नॉन बायस्ड, he should not have any kind of prejudice, he should be completely loyal towards the policy formulation rather than policy implementation rather than politicians, and he has to be regulated. उसके ऊपर जो political boss है उसने उसको regulate करना जरूरी है. And there has to be a hierarchical mechanism without which it will be a haphazard institution. It is well known that the principal focus of Weber's analysis was not administration, but his main distinctive contribution to the field of PUBAD is related to the
analysis of the social and historical context of administration and more particularly bureaucracy. तो देखिए वेबर ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ज्यादा ऐसा एज अ सेपरेट डिसिप्लिन फोकस नहीं किया. वेबर का पूरा एनालिसिस जो है वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर है कि हम ब्यूरोक्रेसी को कैसे बेहतर कर सकते हैं. मतलब आईएएस आईपीएस ऑफिशियल्स की तरफ उनका ज्यादा फोकस हुआ करता था. एंड जो मेन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखें बाकी के जो थिंकर्स थे, बाकी के जो फॉर्मली जिन्होंने लिखा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, उन्होंने ओवरऑल एज अ सब्जेक्ट लिखा है. लेकिन जब हम वेबर की बात करते हैं तो उन्होंने स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ज्यादा फोकस दिया हुआ है. Again, Weber did not invent the term bureaucracy, neither did he define the term bureaucracy, but he did identify bureaucracy as the dominant form in a legal, rational society and specified the features of the most rational form of bureaucracy, which was called the ideal type bureaucracy. तो वेबर की कंसेप्ट थी आइडियल टाइप. आइडियल टाइप मतलब जो आइडियली ऐसा होना चाहिए. ओके, व्हाट ऑट टू बी. आपको ये रियल प्रैक्टिकल लाइफ में ये आपको ऐसा एग्जांपल आइडियल टाइप नहीं मिलेगा. ब्यूरोक्रेसी का आइडियल टाइप क्या होगा कि इट इज एथिकल, इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज अकाउंटेबल, इट इज इम्पर्सनल, इट इज formally regulated, it is properly supervised, there is no corruption, there is proper demarcation of hierarchical authority. प्रैक्टिकल नहीं है इतना. जो एस्पेक्ट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स आइडियली ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में होना चाहिए वो हमेशा नहीं होगा. some parts will be reflected and some parts will not be reflected in. अभी जैसे अगर अफगानिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की बात करें, रशिया की ब्यूरोक्रेसी की बात करें, यूक्रेन की बात करें, इंडिया की बात करें, सबका अलग है. अभी सब जानते हैं कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया तो उनकी ब्यूरोक्रेसी थिंकिंग अलग है. अफगानिस्तान में तालिबान है, उनकी ब्यूरोक्रेसी अलग है, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी अलग है. सो आइडियल टाइप एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग में है कि मेंटल कंस्ट्रक्ट है. मेंटली आप इसके बारे में इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो, पर रियलिटी में आपको ऐसा परफेक्ट एग्जांपल या जो कैरेक्टरिस्टिक्स वेबर ने दिए हैं इस पर्टिकुलर लीगल रैशनल अथॉरिटी की, वो आपको नहीं मिली रियल लाइफ में. तो वेबर मैंने कहा कि वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज्यादा थे, वो थियरी बिल्डिंग में ज्यादा नहीं थे. ब्यूरोक्रेसी के डिफाइन नहीं किया, उसको कुछ इन्वेंट नहीं किया. उन्होंने सिर्फ बताया कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे गवर्नमेंट अपनी फंक्शनिंग कर सकता है. Max Weber not only gave the characteristics and criteria for modern bureaucracy, but also outlined the terms of employment in the bureaucratic organization. कि उन्होंने बताया कि सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स ही डिफाइन नहीं किया, क्राइटेरिया नहीं बताया कि किसके बेसिस पे किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रिक्रूट करना चाहिए, बट ऑल्सो कि what shall be the terms of employment in any bureaucratic organization. जैसे कि officials are personally free and are appointed on the basis of a contract. देखिए ऑफिशियल्स पर्सनली फ्री होंगे, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा उनका स्टेट के साथ जहां पे उनको अपना काम इम्पर्सनली करना पड़ेगा. सो दिस वाज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. उसके बाद ऑफिशियल्स आर अपॉइंटेड नॉट इलेक्टेड. जी हाँ, ब्यूरोक्रेसी को अपॉइंट किया जाता है. इंडिया की बात करें तो सेंट्रल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, स्टेट लेवल पे महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन या जो भी स्टेट होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, वहां का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो उनको अपॉइंट करेगा. इलेक्शंस नहीं होते. वेबर आर्ग्यूज दैट इलेक्शन मॉडिफाइज द स्ट्रिक्टनेस ऑफ हायरार्किकल सबऑर्डिनेशन. इमेजिन कीजिए कि अगर आईएएस आईपीएस भी इलेक्शंस खड़े होकर अगर जीतने लग गए इलेक्शंस, तो वो आईएएस आईपीएस भी पॉलिटिसाइज्ड हो जाएगा, वहां पे भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगा. तो वो कोई अच्छी बात नहीं है, स्पेसिफिकली इन अ कंट्री लाइक इंडिया. उसके बाद ऑफिशियल्स आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस. जी हाँ, कोई पर्सनल लॉयल्टी की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि अरे ये मेरा बच्चा है तो चलो इसको आईएएस बना देते हैं. नहीं, यू हैव टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन. आपके पास बेसिक ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी जाके आप एग्जामिनेशन को बैठ सकते हैं. दे हैव फिक्स्ड मनी, सैलरी एंड पेंशन राइट्स. जी हाँ, कि मनी, सैलरी, पेंशन सब फिक्स्ड होंगे. तो ऑफिशियल्स पोस्ट इन सोल और मेजर ऑक्यूपेशन, उसका यही मेन ऑक्यूपेशन होगा. इसके साथ अगर आप देखेंगे सर्विस टर्म्स एंड कंडीशन, इसके साथ आप कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते. You cannot do the, आप आईएएस आईपीएस बन गए तो साइमल्टेनियसली आप बिजनेस नहीं कर सकते. A career structure exists with promotion based on merit. जी हाँ, दो pressure to recognize seniority में also exist. कि देखिए करियर है एक एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना, ब्यूरोक्रेसी में काम करना, जहाँ पे थ्रू आउट योर लाइफ आपके प्रमोशंस होंगे डिपेंडिंग अपॉन योर मेरिट एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आपका सर्विस रिकॉर्ड, एट द सेम टाइम आपकी सीनियरिटी, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके प्रमोशंस होंगे.
The official is subject to a unified control and disciplinary system in which the means of compulsion and its excesses are clearly defined. ठीक है, एक डिसिप्लिनरी सिस्टम होगी, यूनिफाइड कंट्रोल होगा, जहां पे भी ब्यूरोक्रेट की जो एक्शंस है उसको मॉनिटर किया जाए, वहां पे क्लियर डिसिप्लिनरी सिस्टम रखी जाएगी जहां पे वो अपने पावर्स को मिसयूज नहीं करेगा. ओके, so this is clearly identified so that there is no misuse of authority. Okay, तो ये जो सारे फीचर्स थे, these all features are basically related to मैक्स वेबर. तो अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोचेस में आप देखेंगे तो मोर एम्फेसिस इज गिवन ऑन वेबर. ऑलराइट, सो इसके अलावा आगे हम देखेंगे कि कैसे पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी जो वुड्रो विल्सन ने एम्फसाइज की थी, जहां से ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ, वो हम अगले सेशन में देखेंगे. टिल नाउ वी अंडरस्टूड दैट यूरोप में और अमेरिका में वेबर की जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है उसको अप्लाई किया जाता है, और अब तक as per Weber and as per me also, bureaucracy को अब तक कोई alternative मिला नहीं है. All right. So, with respect to traditional approaches to public administration, we'll stop at this particular moment and then we'll continue with the next part in the next session. Thank you.